Good morning, dear students. Let's start maxima and minima. Students, here is the working rule that we have already discussed, and I'm sharing you again. Here fx is given. We need to find its derivative first, and after that make it factor so that becomes convenient to solve. And for maxima and minima, put derivative is equals to 0. In this way we get the critical points. And now find the second order derivative of the same and put the critical point one by one, and if it gives negative result then it is maximum, otherwise minimum. And students, if it gives a zero result then further investigation is required. सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वर्किंग रूल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले 3 सेशंस में आपको ये वर्किंग रूल शेयर किया है. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स स्टार्ट. Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं. शो दैट ऑल दी रेक्टेंगल्स, वो सभी रेक्टेंगल्स जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, दिस स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया. और ये हम लास्ट में उसे प्रूव करेंगे कि दैट रेक्टेंगल बिकम अ स्क्वायर एंड दैट हैज़ मैक्सिमम एरिया. सो स्टूडेंट्स, हमने एरिया को मैक्सिमम शो करना है और हमें गिवन फिक्स्ड सर्कल है. दैट मीन्स सर्कल से रिलेटेड हमें जो भी दिया जाएगा दैट विल बी कांस्टेंट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Here we have the let radius be r of the circle, let x be the length and y be the breadth of the rectangle. Now students, we know that by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, and you can see here that AC is the hypotenuse and perpendicular is AB and base is y square. Students, you can choose this is perpendicular and this one also base. So here in this way we get x squared plus y squared is equals to 4r square. Now students, you better know that in the previous questions we have, if we have to prove maxima or minima, then we take that function and convert the function into one variable only. So here we have y square is equals to 4r square minus x square, and we use this result to prove the function maximum or minimum. Here you can see that A is the area of rectangle. This is the area. Area of rectangle is length into breadth. और स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एरिया को मैक्सिमम शो करना है. हेयर वैल्यूज़ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स एंड वाई. नाउ स्टूडेंट्स, हमें इसे कन्वर्ट करना है in one variable, because if we do derivative then we do derivative with respect to what function, which function, x or y. So students, if we convert the complete function in the form of x variable, then we will do derivative with respect to x. Since a has square root, it will be difficult to differentiate, so we take here z is equals to a square. Students, अब आपको एक कंसेप्ट को नोटिस करना है. हमें a इज इक्वल्स टू एक्स अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को प्रूफ करना है मैक्सिमम. जब भी स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई में नंबर्स एक्सप्रेशंस दिखाई दें और उसमें से कोई एक एक्सप्रेशन अंडर रूट है, तो हम यहाँ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसा करने से वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हमें ये रिजल्ट मिलता है. बट स्टूडेंट्स, इफ़ वी डू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, हेयर वी यूज़ द प्रोडक्ट रूल. बट व्हाट अबाउट a स्क्वायर? वी कैन रिप्लेस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू z. इन फैक्ट स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ अनदर वेरिएबल्स. बट ध्यान रखना एक बात का, हम यहाँ वो वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका स्टेटमेंट में वेरिएबल का यूज़ नहीं है. सो इन दिस वे वी पुट हेयर z is equals to ax square, we get z is equals to x square 4r square minus x square. We have done here squaring both sides. Now students, multiply x squared with both the numbers. This is called the distributive law. We get z is equals to 4r square x square minus x raised to power 4. Now students, we do its derivative with respect to x.
In this way, we get dz over dx. Derivative is so simple. And derivative of x square is 2x, and here r is constant because it is given in the statement that circle is given. So students, जो भी हमें given word use किया जाएगा जिसके लिए, उसे हम constant treat करते हैं. So अगर circle constant है, that means circle में only one ही रेडियस ही होता है जिसे हमने डिटरमाइन करना होता है. सो हेयर r is the constant, and here derivative of x4 is 4x cube. So students, in this way we get the derivative, and after that putting dz over dx is equals to 0, and here 8r square x minus 4x cube is equals to 0, and by solving this one we get x0 and x square is equals to 2r square. So students, in this way x is equals to 0 is not possible because अगर लेंथ 0 हो जाती है तो रेक्टेंगल तो बन ही नहीं पाएगा. इसीलिए स्टूडेंट्स हम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर को कंसीडर करेंगे. इसके लिए भी हमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है. आप देख सकते हैं यहाँ. इसके लिए अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव इज derivative of x is 1, derivative of x cube is 3x square. So students, in this way we get 8r square minus 12x square. Now students, here value of x is, you can see here the value of x is under root r. So we put value in the second derivative. In this way we get the answer minus 16r square. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारा आंसर कैसा है, नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें फंक्शन दिया गया है दैट इज़ द मैक्सिमम, एंड दस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r square. Now students, we need to prove that the given rectangle is a square. That means we need to prove x is equals to y. So here we have y, value of y is under root 4r square minus x square, and by putting x square is equals to 2r square, we get here 2r square, and we get y is equals to under root 2r. So students, in this way you can notice that x and y both are equal. So in this way given rectangle becomes a square and also has maximum area. So students, let's start the next question. Next question is question number 20th. Show that right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equals to the diameter of the base. Students, this question really very important question. आपको यह स्टेटमेंट को समझना होगा. हमारे पास यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है जिसमें गिवन सरफेस एरिया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें मैक्सिमम शो करना है. सो स्टूडेंट्स, जो गिवन होता है, गिवन सरफेस एरिया है, तो हम S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड वेयर S इज कॉन्स्टेंट बिकॉज दैट इज गिवन. एंड आफ्टर दैट we need to prove that its height is equals to the diameter of the base. That means h is equals to 2r. So let's start the solution. Here you can see the diagram of cylinder. R is the radius and h is the height. Let r and h be the radius and height of cylinder respectively, and Vs be the volume and surface area of cylinder respectively. And here surface area of cylinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. You know the formula. And students, आप यहाँ देख सकते हैं S is constant and we need to find value of one variable. हमें स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसे हम सेपरेट आसानी से कर सकें. आप यहाँ देख सकते हैं कि हम h की वैल्यू बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. इन दिस वे 2 pi r square taken to the left hand side, we get s minus 2 pi r square divided by 2 pi r. So students, here we get the value of h. Now volume of cylinder को हमें prove करना है maximum and formula is pi r square h. Now students, do its derivative. Before doing derivative, first check either the given function is in one variable or two variable. Here you can see that r and h both are the variables functions. So convert h into r and we will use the first result, previous result. So students, here you can see that pi to pi will cancel, r to square will cancel out.
Now here we get the value of V, pi r square over 2 pi r s minus 2 pi r square. So students, in this way you can see here that V is equals to r over 2, r to square cancel, pi to pi cancel, we get r over 2, s minus 2 pi r square. Its derivative with respect to r is 1 over 2 constant, as it is derivative of sr, and you can see here s is constant and sr, and we are doing derivative with respect to r, so derivative of r with respect to r is 1. In this way we get s, and similarly derivative of r cube is 3r square, so we get 6 pi r square. Now for maxima or minima, put dv over dr is equals to 0, and in this similar way we will put s minus 6 pi r square is equals to 0. On calculating this one, we get the value of s is equals to 6 pi r square. एंड स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें s की वैल्यू आ चुकी है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 2 pi r square 2 pi r h, you will see here that in this given function we will put these values. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 pi r square plus 2 pi r h minus 6 pi r square is equals to 0, and here 2 pi r square minus 6 pi r square becomes minus 4 pi r square, and here 2 pi rh is common, so in this way we get factor h minus 2r. That means if we equate equal to 0, then we get a height is equals to the diameter of its base. Now for maxima function we will do again derivative of s is 0, derivative of r square is 2r, so in this way we get minus 6 pi r, that is negative. So students, in this way given volume of cylinder is maximum when height is equals to the diameter of its base. So students, in this way today we have completed 2 questions, and these questions are very important, so do more practice, and thank you for watching the complete video.